एवरीवन एंड राम राम सबको। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे भैया वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो वीडियो इस चक्कर में नहीं आ रही कि मेरे थोड़े मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसमें भी स्कोर अच्छा करना था। तो इसलिए थोड़े दिन मैं पढ़ाई करा। वैसे तो पढ़ता नहीं मैं कॉलेज का, पर थोड़े दिन पढ़ा उस चक्कर में, इसलिए थोड़ा उसमें बिजी था। बट अब से वीडियो रेगुलर आएगी, और हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी, दोनों में मिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो अब अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप कमेंट करते थे कि भैया हिंदी में बनाओ वीडियो, तो अब हिंदी में भी आएगी। और इसके साथ हम लोग एक प्लान किए हैं कि आपके लिए एक 75 डेज़ का वो रखा जाएगा चैलेंज, जिसमें हम क्या करेंगे कि डेली लीड कोड की प्रॉब्लम डालेंगे। उसमें आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देखना है, और फिर उसका इंट्यूशन अपने माइंड में डेवलप करना है कि कैसे इसका इंट्यूशन हो सकता है। और जब आप इंट्यूशन डेवलप करना सीख जाओगे, इसके बाद आपको क्या करना है, कोड करना है उसके लिए। स्टार्टिंग में नहीं होगा, जो बिगनर्स है उनके लिए बता रहा हूँ, जो प्रो है वो तो उनकी बात अलग है। मैं बिगनर से प्रो तक बनाना चाह रहा हूँ इन 75 डेज में। सो हम लोग क्या करेंगे कि आप कोड देखिए, मीन्स आप क्वेश्चन पढ़िए, इंट्यूशन डेवलप कीजिए, एंड देखिए कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन अप्रोच दैट। हाँ, देन वी विल कोड। फर्स्टली ट्राई योर सेल्फ, मतलब पहले आपको करना है। फिर अगर नहीं आ रहा, अगर कुछ क्योंकि कोडिंग ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट हो सकती है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है। इसलिए मैंने 75 डेज का चैलेंज रखा है कि 75 डेज में आपको बिगनर्स से लेके बिल्कुल टॉप लेवल तक बनाने की जिम्मेदारी मेरी, पर आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा वो चीज़। और इसके साथ बस यही कि वो पूरा सीरीज़ फॉलो कीजिए 75 डेज़ का, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है और बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने देखा है। तो आप उसको फॉलो कीजिए, सीरीज़ को। और मैं डेली लीड कोड प्रॉब्लम्स डालूँगा, आपको पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है। और आप ये देखोगे, यू विल फाइंड आफ्टर 30 और 35 डेज़, मीन्स 15 और 20 डेज़ ऑल्सो, then you are doing better. You are better than the other coders who are doing coding in this field. So you have to follow me. Okay. देन ये चीज़ हो गई। फर्स्ट थिंग इज आपको 75 डेज तक फॉलो करना है, मीन्स आगे तक करना है। हम तो सीरीज आगे तक डालेंगे, पर इन 75 डेज में आपको प्रो कोडर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। और बस यही कि अब जो हम वीडियो नहीं डाला मैंने, मीन्स कुछ दिन का गैप आया, वो अब नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि अब मैं अब रेगुलर वीडियो डालेंगे। वो कुछ तकलीफें भी थी, परेशानी भी थी, मतलब कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी थे, तो अब वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो अब आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स अब डेली वीडियो आएंगी। तो आप क्या कीजिएगा, जब आप इंट्यूशन डेवलप कर लो प्रॉपर क्वेश्चन देख के, तो आप कोड देखिएगा, ठीक है। और आपने जो इंट्यूशन डेवलप किया है उसको आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा अगर वो इंट्यूशन अच्छा होगा। मैं इसमें आगे जाके गिव अवे भी रखने वाला हूँ। तो आपको बस क्या करना है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इन चीज़ों में। आपको रेगुलर फुल वीडियो देख रही है। कोई बहुत लोग आते हैं कि हाफ वीडियो देख लेते हैं, उससे वो इफेक्टिव नहीं है वो वीडियो। वो आपके लिए इफेक्टिव है ही नहीं। आप डायरेक्ट वीडियो देख लो, या स्टार्टिंग में कुछ देखा और चलो छोड़ दिया, वो इफेक्टिव है ही नहीं। और आप रेगुलर वीडियो देख लो पूरी, अपने आप से ना करो, तो वो भी रेगुलर मतलब इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज कोडिंग इज यू हैव टू डू योर सेल्फ। कोडिंग ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ के और आ जाएगा, मीन्स आपको करना पड़ेगा उसमें, मतलब घिसना पड़ेगा, तब आपको कोडिंग आ सकता है। तो बस आपको ये चीज़ करना है। सो ये मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हो। और अपने माइंड में इंट्यूशन फर्स्टली डेवलप द इंट्यूशन बाय योरसेल्फ, एंड डेवलप द डेटा स्ट्रक्चर, व्हिच डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज in this problem. So develop this. Okay, let's start the problem. Okay, let's look the problem.
In this problem, we have given a array in cost of ith index. We can let's simplify this problem. We can either go on a index 0 and go from the index 1, and we have to go out of the array. So हम या तो एक इंडेक्स से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं या 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और हम या तो एक क्लाइंब कर सकते हैं, एक जंप कर सकते हैं, या दो जंप कर सकते हैं। तो हमको कैसे दे रखा है कि कॉस्ट दे रखा है 10, 15 एंड 20। अगर मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ तो जीरो इंडेक्स पे 10 ऐड करूंगा, फिर या तो मैं 15 पे जा सकता हूँ या 20 पे जा सकता हूँ, फिर मेरे को समथिंग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं 15 ऐड करूंगा 25 हो जाएगा, 20 ऐड करूंगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मेरे को अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 15 को ही ऐड करूंगा, और मैं डायरेक्टली 2 स्टेप्स करके डायरेक्ट आउट ऑफ द एरे चला जाऊंगा। So that can be better for me. So I will add this 15 also. Let's look the example 2। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ तो टू जंप करके फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाऊंगा, फिर मैं अगेन टू जंप करके फर्स्ट इस पे चला जाऊंगा, वन ऐड करूंगा, फिर टू जंप करके वन ऐड करूंगा, फिर वन जंप करके वन ऐड करूंगा, क्योंकि अगर मैं टू जंप करके 100 ऐड करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं करना अपने को। तो बस ऐसा करना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यार बार बार मैं जंप कर रहा हूँ, फिर मैं मिनिमम को ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है कि मिनिमम को अपन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें रिकर्जन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट टू कॉल्स अपन डाल दें इसमें और बाकी के लिए फंक्शन कॉल कर दें, तो दैट कैन बी बेटर अप्रोच फॉर मी। सो लेट्स ट्राई फॉर दिस। बिफोर द ट्राइंग, लेट्स लुक दिस। These are the example of the stairs। दिस इज द रिकर्जन। अगर मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ तो मैं या तो फर्स्ट स्टेप लेके फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंचूंगा, या टू स्टेप लेके सेकंड इंडेक्स तक पहुंचूंगा। तो मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, और ऑल्सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द array, means I can start from the top of the array, then I will go n minus वन, then n minus टू। सो इनमें इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं n से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से n माइनस वन, देन आउट ऑफ द एरे। तो मैं आउट ऑफ द एरे से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं उसको आउट ऑफ द एरे वाली वैल्यू को ऐड नहीं कर सकता। तो व्हाट विल बी माय फंक्शन कॉल? देन फंक्शन कॉल विल बी f of n minus वन प्लस f of n minus टू, देन मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन। अगर मैं n जीरो से n माइनस वन पे हूँ, अगर मैं n माइनस वन लास्ट वाली इंडेक्स पे हूँ, लास्ट वाली मीन्स ये फिफ्थ इंडेक्स पे हूँ अगर मैं, तो फिफ्थ इंडेक्स पे हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को फिफ्थ इंडेक्स वाले ऐड कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर उससे पहले वाली फर्स्ट इंडेक्स वाली को भी ऐड करना पड़ेगा, और उससे सेकंड इंडेक्स वाली को भी ऐड करना पड़ेगा, मीन्स उसका मिनिमम लेना पड़ेगा। So in that case the function call will be minimum of f of k minus 1 plus comma k minus 2, then we will add that cost also, so cost of k, that will be a function call। So it's a basically GP problem। So let's look the code for this sir। So firstly I define int n equals to cost dot size। तो फर्स्टली मैं कॉस्ट का साइज डिफाइन करूंगा, तब एन इंडेक्स के लिए मीन्स आउट ऑफ द बाउंड के लिए, आउट ऑफ द एरे के लिए मैं क्या करूँगा, इंट आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ प्रीवियस टू एलिमेंट्स, मीन्स सॉल्व फंक्शन जो बनाया मैंने उसमें कॉस्ट कोमा एन माइनस वन करूँगा, ये फर्स्ट वाला उससे प्रीवियस वाला एलिमेंट, कोमा कॉस्ट ऑफ सॉल्व ऑफ कॉस्ट ऑफ cost comma n minus 2, then I will return this directly। So return answer। So let's write the function
int solve of vector int cost comma int n। मैंने फंक्शन में कॉस्ट को पास कर दिया और एन को पास कर दिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द बेस केस फॉर दिस। बेस केस विल बी इफ एन इक्वल्स टू जीरो, अगर मेरा एक ही इंडेक्स पे हूँ मीन्स जीरो इंडेक्स पे हूँ, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कॉस्ट ऑफ जीरो। एंड इफ n equals to 1, when we will directly return cost of 1. This is done. Now I will write the function code for this. Then what will be the function call? I will write int answer equals to, अगर मैं 0 से n-1 पे हूँ, मान लो मैं n-1 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मान लो इस 20th इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैं, तो मैं इससे दो प्रीवियस कॉल मीन्स 15 से आ सकता हूँ या 10 से आ सकता हूँ, प्लस जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ उसका कॉस्ट ऐड करूँगा। तो उसको कैसे करेंगे कि मिनिमम ऑफ सॉल्व ऑफ कॉस्ट कॉमा n-1 प्रीवियस इंडेक्स कॉमा सॉल्व ऑफ कॉस्ट कॉमा n-2 इंडेक्स प्लस जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ कॉस्ट ऑफ n। This is done, and now I will directly return the answer. Let's run this code. This is a recursion solution, so definitely it will give me TLE. Yeah, it's giving TLE. 259 cases passed, but it's giving TLE. So let's optimize this solution. So it's a recursion solution, so we can try for the dynamic programming solution. So in dynamic programming, we can try for memorization. So let's do the memorization code for this. So firstly, in memorization, there is a simple way. We can create a DP, vector int DP of file n plus 1, comma, minus 1, initializing with minus 1. Okay, then I am passing this in solve function. Then this is done. Then return of answer. This is perfect. So why it is 1D DP and why I am passing the n plus 1 comma minus 1? So we can see only n is changing. Cost is same. N is changing in the function. So it's a 1D DP because n is changing. So let's write the code in solve by using memorization. I'll pass vector int dp comma int n. So I can do one thing. I can do some changes in the previous code. So I'll pass here vector int dp. Then if dp of n not equals to minus 1, then return directly dp of n। अगर वो dp of n minus 1 के इक्वल नहीं है तो डायरेक्टली विल रिटर्न द dp of n, and we have find the answer of this, then I'll pass the dp here also, dp here, and I will directly return, so dp of n equals to answer, and directly return the dp of n. Let's directly submit this. Yeah, it is working perfect, taking 3 milliseconds, better than the 84.96 C++ users. So the time complexity for this solution will be big of n because and you can see uh,
Here is a function called solve of cost of n minus 2 comma comma dp, and the space complexity will be big O of n also, big O of n plus 1 approx equals to big O of n, because we are using the vector. We can optimize this solution using tabulation approach and space optimization. Tabulation approach, if I do the tabulation approach also, if tabulation, I'll pass vector int cost. This is cost now. This is cost. Okay. Hmm. Now, int directly n. In tabulation approach, we can see from this. If n equals to 0, then directly return cost 0. So, firstly, we will create a vector int dp of size n plus 1. Okay, so let's comment out this and directly pass the function solve tabulation. I am passing in cost and comma n. This is perfect. dp of 0 equals to cost of 0. You can see the recursion solution, then you will find the better. And if n equals to 1, then directly we are returning cost 1, then this will be dp of 1 equals to cost of 1. Now 0 and 1 is fine. Then I will create a loop if for int I equals to I less than n, then I plus plus. In loop section, dp of I equals to minimum of dp of I minus 1 comma dp of I minus 2. This is perfect, and plus cost of I. Now we have added. Now we will directly return minimum of dp solve dp function. If I pass dp function dp of n minus 1 comma dp of n minus 2. This is perfect for the solution. Let's run this. It is working perfect. Let's submit this code. Better than the 84.96%. We can further optimize this code using space optimization. In space optimization, the space will be finally the space will be big O of 1. However, the time complexity will be big O of n, but we can reduce the space. So in this solution, we have seen three solutions: recursion solution, then we optimize the recursion solution by using memorization. Then further we have optimized the memorization solution to tabulation solution. So we can see space optimization solution also, but that in that case the video will be very long. So in a space optimization solution, it's on you. Let's think about this or comment करो. So if you find this video helpful, then please like, share and subscribe.